24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦੈਟ ਅਪ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, CPA ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ PC24 ਤੇ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 5 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇੱਕ $50 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ 4 ਹੈਗੇ ਜੀ $25 ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਲੁੱਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਂਸਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 8 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੈਰੀਅਟ ਟਬਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੈਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, US ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 70 ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। 1849 ਚ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ 70 ਸਲੇਵਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤਲਵਾਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨਿਸਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। The first woman to lead an armed expedition in the war, she guided the raid at Homebuyers, which liberated more than 700 slaves. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਰੀਅਟ ਟਬਮੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਵਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗਨਸ ਵਿਦ ਅ ਡ੍ਰੀਮਰ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਹੈਵ ਵਿਦਿਨ ਯੂ ਸਟਰੈਂਥ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਐਂਡ ਦ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਚ ਫॉर द स्टार्स, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਬੀਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ 70 ਸਲੇਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰਮਡ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕਰਕੇ 700 ਸਲੇਵਸ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਡੂ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ। ਪਰ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਰਾਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਿਰਾਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। These combinations, they make it possible for you to realize your dream. Well, it will take a few minutes to digest what I just said. ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹਲੇ ਫਲੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟਸ ਵਧੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। 2022 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, 2023 ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, 2024 ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 3.5 ਜਾਂ 4% ਦੇ ਨੇੜੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, 30 ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਮਿਸ देयर ਸਾਈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਆਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਫੜੋ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ dpjain.cpa.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਵਿਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਟੇ ਵਿਦ ਮੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। जैन साहब, वेलकम सर। पॉल साहब नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत मुश्किल से आप मिले हो जी, आई नो यू आर एक्सट्रीमली बिजी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने चाहा कि मैं आपके जो लिसनर्स हैं उनके साथ कुछ अपने व्यूज शेयर करूं। सो व्हाट यू वांट मी टू शेयर। आई नो कि टैक्स सीजन भाग आ रहा है और मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा ही थोड़ा सा डांट भी देते हो कि तुम डिले कर देते हो। ये अपनी दोस्ती और भाईचारे की बात है, डांटने की, नॉट एज ए प्रोफेशनल। अच्छा लगता है, डांट खाने में भी अपनी मजा है जनाब। आपने सही कहा है। कभी कभी मेरे क्लाइंट मुझे शिकायत करते हैं जैन साहब नाराज हो गए हो। मेरा हमेशा उनको एक ही बात कहना होता है कि यदि आप ये मान रहे हैं कि मैं एज ए प्रोफेशनल नाराज हो रहा हूँ तो गलत है। मैं आप पर नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि आपकी डिले के कारण या इग्नोरेंस के कारण या हमारे फॉलो अप करने के बावजूद भी आपका जो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसके कारण यू एंड अप इन पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है। और आपके इंटरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए समटाइम वो जो क्योंकि इतने साल की पुरानी रिलेशनशिप है वो मुझे पिंच होती है प्रोफेशनल, व्हाई we are following up, still you are delaying the stuff that will end up in a huge amount of interest and penalty. So our interest is not to get upset but to protect your interest. तो वहां जो एक अपनापन, एक काइंड ऑफ
वी फील एज ए राइट बिकॉज ऑफ ईयर रिलेशनशिप, तो वहाँ बहुत सी बार नाराजगी आ जाती है। जैसे कि आप अपने पेरेंट अपने बच्चों पर नाराज हो जाते हैं, या एक भाई दूसरे भाई पर नाराज होता है, तो उसके पीछे रीजन ये नहीं नाराजगी है, वो प्यार है आपका, एक दूसरे के प्रति चाहत है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। देयर इज अ होल रीजन, नॉट एज ए प्रोफेशनल। मुझे इतना पता है जी, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब मैं आपके ऑफिस में आता हूँ मुझे लगता है कि मैं प्रिंसिपल के रूम में जा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। प्रिंसिपल ने मुझे डांट लगानी ही लगानी है। ये होता ही होता है, क्योंकि हम सेल्फ एम्प्लॉयड का फंडा ही ऐसे है कि जब सिर पे बुरी तरह पड़ जाए ना तभी भागो, अदरवाइज बिजनेस के पीछे भागते रहो। क्या करें, हमारी लाइफ ऐसी है। पॉल साहब, टैक्स का एक सिंपल सा फंडा है। वेल जी मैं बिजनेस क्लास की बात करूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की, क्योंकि जो जी सैलरी क्लास है उनके लिए दो तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, T4, T3, T5, T4A एंड ऑल। सो उनका जी टैक्स थोड़ा सिंपल होता है, और उनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज ना हो तब भी काम चल जाता है। लेकिन जी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस पर्सन है, it's mandatory they keep track of all their income and all their expense. If you जी are regular, you are organized, at the end your taxes are very simple. It won't take much time, and any tax professional will help you to save as much as possible. जी Sometimes हम क्या सोचते हैं कि even if there is no backup we are good. Well, जी this does not hold true always. जी As long as CR is not coming behind you, we feel okay यार, मैंने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, इट्स बीन ईयर्स, आई वाज नेवर जी ऑडिटेड, नेवर एग्जामिन्ड, तो मेरा अकाउंट ऐसे ही बोलता है कितने डॉक्यूमेंट रखिए। वेल अगेन, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि हाईवे पर जो हमारी ड्राइविंग स्पीड है 100 किलोमीटर की है, और जी एवरेज 150 120 सभी लोग भागते हैं या ड्राइव करते होते हैं। बहुत से ड्राइवर्स 130 140 भी चलते हैं। पॉसिबल है कि एक व्यक्ति या डीपी जेंट्स इतने सालों से ड्राइव कर रहा है, पिछले 20-22 साल से ओंटारियो और कनाडा में, शायद जी 20-22 साल में एक या दो टिकट ही मिली होंगी स्पीडिंग की। लेकिन एज ए जनरल हम लोग हमेशा स्पीडिंग करते हैं। बट एक या दो टिकट मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि मुझे अगली बार टिकट नहीं मिलेगी, अगले महीने मुझे 4 बार टिकट नहीं मिलेंगी। दिस इज जी जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। और टैक्सेस में, अच्छा जहाँ टिकट मिल रही है वहां हो सकता है टिकट $100 की या $200 की हो, लेकिन टैक्सेस में दिस में कॉस्ट यू थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, एंड एब्सोल्युटली not only $1,000 penalty and interest or जी tax, but it may lead up any other thing. It could lead up to a full-blown complete tax audit or GST audit or net worth audit. You never know. So जी please be organized. Don't mess up with the tax man, and follow your accountant's advices. जी सर, मुझे पता है जी, मेरा वादा है जी आपसे इस बार। आई एम वेरी माइंडफुल, विल हैंडल इट बिफोर। लाइव बात कर रहा हूँ आपसे तो ऐसे ही करूंगा, वक्त रहते Thank you. आपके पास आ जाऊंगा ताकि आपको स्ट्रेस ना कराऊं मैं। और This is not my जो interest. ये आपने सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की, मेरे एक जी। दिमाग में एक बात एकदम छलांग लगा के आ गई। हम्म। ये है कि जो रिसीट्स वगैरह होती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, उनको या। कितनी देर रखना होता है संभाल के? हम्म। देखिए ड्यूरेशन है, जनरली, जैसे हमने टैक्स फाइल किया और फाइलें पड़ी हुई हमारे पास तो ढेर का ढेर लगा रहता है, तो उसकी कोई म्याद है कि इतने देर के बाद आप रिसीट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? also a very good question. Well, as per CRA guidelines, minimum 6 years we need to maintain the entire record, all the bills, अच्छा receipts, our proofs, our copy of tax return, T4 and all the documents. यदि हमारा कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट हुआ है तो उसके बाद ही फर्दर 6 years हमें सेव करनी पड़ती है। दिस इज CRA's अच्छा गाइडलाइंस। If we lose them, this is not an excuse कि sorry somehow I lost them, and CRA would accept this argument. In that case, CRA will go by whatever evidence is available, and they will make their judgment. And then we are not in a position to, counter the CRA's arguments. जी अच्छा, तो मतलब असेसमेंट मान लीजिए कि 2021 की हुई, जाके 2022 के एंड में या कई बार 23 में भी हो जाती है, इनका पता नहीं कब पीछे चले जाते हैं। Then तो फिर दो another साल 6 years. Yes. Then another six उसके years. आगे, Exactly. यस। उसके तो आगे आप यदि 6 ईयर। देखेंगे कभी, हाँ, कभी भी यदि सीआरए के नोटिव असेसमेंट आते हैं, समटाइम्स सीआरए हमारी कोई ऑडिट करती है, जी, इट कुड बी ए स्मॉल ऑडिट और जस्ट ए पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑडिट और लाइन ऑडिट। जब सीआरए जी हमें उसका नोटिव असेसमेंट भेजती है, या बहुत जी बार हम हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, सीआरए रिटर्न द डॉक्यूमेंट, तो सीआरए जी अपने उस फाइंडिंग में क्लियर लिखती है कि प्लीज कीप योर रिकॉर्ड फॉर अनदर 6 years।
क्लियर के रिकॉर्ड। तो सीआरए इज वेरी डिलीजेंट इन दैट केस। जब भी सीआरए में कोई डॉक्यूमेंट भेजती है, दे आल्सो मेंशन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस एंड व्हाट आर आवर जी, राइट्स। वेरी नाइस जी। और मुझे जितना समझ आता है जैन साहब, जी। कि हायरिंग सीपीए और अकाउंटेंट टू फाइल योर टैक्सेस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जैसे हमारी इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन होती है, इसकी हम्म। कितनी कंप्लेंट्स हुई। मुझे नहीं पता कि सीपीए का या किसी का ऐसा रिकॉर्ड होता है, पब्लिक रिकॉर्ड, कि पीपल कैन लुक अप कि इसका कैसा रिकॉर्ड है, कितना बढ़िया प्रोफेशन है, कितना बढ़िया प्रोफेशन नहीं है। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑलवेज गो विद द बेस्ट पर्सन, डोंट ट्राई टू start negotiating where you don't have to negotiate. So do you agree with me कि right professional means a lot when you are talking to CRA the taxman? डेफिनेटली चीमा साहब, जैसे कि बीइंग ए रियल एस्टेट एजेंट यू आर रेगुलेटेड। सिमिलरली जितने भी सीपीएज हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय देयर प्रोविंशियल बॉडी एज वेल एज नेशनल बॉडी। और कि Right. कोई देयर कुड बी वेल एवरी सीपीए हु इज प्रैक्टिसिंग एज पर provincial body, they must have their license, they must be a member in good standing, and at the same time they must have एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस, जिसको हम प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं, सो दैट टुमारो यदि बिकॉज ऑफ माई टैक्स फाइलिंग और माई एडवाइस है, यदि मेरे किसी क्लाइंट को कोई लॉस होता है, दे कैन जी। ऑलवेज सू मी एंड देन माई प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस विल कवर माई सेल्फ। वेल अच्छा अच्छा। सॉरी टू, मेरे बहुत से प्रोफेशनल ब्रदर्स यदि इस एपिसोड को सुन रहे होंगे, दे मे नॉट लाइक, बट इन आवर कम्युनिटी जी and in CPA fraternity, personally I know at least few CPAs who are, for the public they are showing they are CPA, and they are जी CPA no doubt, but they are not member of CPA Ontario, they are not holding any practice license, they are not buying any error and omission insurance, but still as a layman, as a common man जो सर्विस ले रहा है, उनको नहीं जी पता, वो देखता है कि सीपीए है यार, अपने कार्ड में जी। सीपीए लिखा हुआ है, उसे नहीं पता कि उसने अपनी मेंबरशिप ली हुई है, क्या हाँ उसने जी। इंश्योरेंस बाई की हुई है। यदि आपने किसी भी सीपीए के बारे में ऐसी इंक्वायरी करनी है, यू गो टू सीपीए वेबसाइट, यू पुट द अच्छा जी। नेम ऑफ द सीपीए और देयर फर्म एंड इट विल शो अप। यदि डीपीजन के बारे में अपनी इंक्वायरी करनी है, यू गो टू ओंटारियो सीपीए वेबसाइट, पुट डीपीजन प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन और डीपी जैन धर्मा जैन, एंड इट विल जी पॉप्स अप कि वेदर डीपी जैन मेंबर है, नहीं है, गुड स्टैंडिंग में है, नहीं है। यदि डीपी जैन मेंबर नहीं है, डीपी जैन का नेम अच्छा वहां जी। पॉप अप नहीं। आई टेल यू सारा रिकॉर्ड जो है लोगों को देखी जाता है कि इसका रिकॉर्ड पीछे कैसा है। exactly at the same time, yes, if any complaint go to CPA, then definitely it's a they run a complete check. It's a highly ethical grounds where they check the competency and they look into each and every complaint, and this complaint can ruin the career of any CPA. It could be fine, reprimand, suspension of their license, complete Right. revocation. And as a member of CPA, every month we received complete emails and documentation and our magazines from CPA where there are all these kind of cases highlighted. And yes, our community also involved. There are few CPAs from our community. Well, from all the community, because ultimately we all are human. Doesn't matter I come from a Indo-Canadian community or I come from a different community, because जी ultimately we are professionals and we are human beings. So all communities and all kind of people are there. All kind of professionals are there. Sometimes this could be intentional. Sometimes it could be unintentional. While you're working, you commit errors and mistakes that could cost you dearly. So yes, all these kind of things happens. So be careful whenever you're dealing with a professional. Make sure that professional is registered. He's holding a license. He's a valid बिल्कुल। member, and he's if the professional's name shows in the record of the institution, that means the professional is obviously buying the insurance. Otherwise, his name won't stay there. That is very nice जी, very good information जैन साहब, this is very enlightening and honestly मुझे कहीं बहुत पता बार ऐसा नहीं था। होता है, बिकॉज हाँ जी। एज यू नो कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काफी बिजनेस फाइनेंशिंग वगैरह में हेल्प करता हूँ उनकी। जी So there are so many time happens कि जो मेरे known bankers है, they call me and ask, Jain sahab, kya you know ABC? I said, well, why? Because this person has given, or this client, or so and so client has given us their financial statement. Those are prepared by so and so ABC Inc. or ABC Corporation, but we don't see his name or her name. I said, well, if I know personally someone in our community, I say, yeah, I know this person. But rest, whether this person is licensed or registered or having the valid members, that I don't know. You check it out. Or if I never heard the name, I say, sorry, I don't know.
You go and on the website and check it. Then they say, yeah, name is not appearing. Then I say, if his or her name doesn't appear there, then it means there is something. बिल्कुल Maybe सही this बात है person either is not a member, or if he's a member, he is not maintaining a license. So yes, well, the banks do their own due diligence. Whenever a report, a financial statement prepared by a CPA is submitted to them, they make sure जी। that this person is in good standing, holding the license, and really a CPA from Ontario or any other province. Well, that's a very good information. This is first time I'm coming across this information. Jain sir, I actually wasn't aware of that there is certification and people have to be registered with Ontario CPA Yeah. जो आप ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं तो उसमें we can check कि ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है. So Even जैन when साहब मुझे CPA थोड़ी सी माफी चाहूंगा आपसे मेरी शायद ऑडियो आज क्लियर नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है. So many intricate things connected. I don't know how you are hearing me. Are you hearing me right? well, yeah, it's little shaky, but yeah, I am able to hear it. Yes. Okay. Yeah, I'm trying to figure out while we talk, but I have no idea what's going on. But maybe some little glitch somewhere. क्योंकि अभी कल ही मैंने कंप्यूटर अपडेट किया है कोई विंडो का नया वर्जन आया है तो मैंने Well, वो डाउनलोड कर ultimately, लिया. this is technology, Paul sir. Sometimes technology टेक्नोलॉजी works in a different way, and we don't understand technology. So sometimes it's no no wrong. we really don't know how things work. Anyways, I know I will fix this up sometime in the middle. Anyways, तो जैन साहब अभी टैक्स सीजन जो है वो आने वाला है. ठीक है जी. तो अब उसमें लोगों को आज ही से तैयार हो जाएंगे तो उनके लिए इजी रहेगा. ठीक है मेरी True, ये that's true. सोच है. तो याद होगा कि इस बार मैंने भी थोड़ा प्रोएक्टिव स्टेप लिया आपको पहले कॉल किया. Yes, I remember, and we met. ठीक. So my advice to इज all देयर the एनी self. जी Ji, Ji, please go ahead. हमारे जो रियल एस्टेट वाले हैं मोस्टली वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ही. उनको थोड़ी सी ज्यादा गाइडेंस चाहिए होती है क्योंकि दे यूजुअली commit many things which they should not. What Hmm. are the top tips you would like to share with them and how they should, gather all the paperwork for them to go to their accountant so that the filing is hassle-free and smooth? Well, also a very good question. Well, if any real estate agent they are practicing as a self-employed person instead of a corporate under corporation under real estate corporation that's allowed since 2020. तो जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयड की बात है वेल नो टिपिकल बुक कीपिंग इज नीडेड बट यस जी दे मस्ट मेक श्योर दैट प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर ऑल देयर एक्सपेंस इज मेंटेन्ड. आपके किसी भी लिस्टनर रियल एस्टेट एजेंट को या नॉन एजेंट को भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में है इफ दे जी रिक्वायर दे कैन सेंड मी टेक्स्ट और एन ईमेल एंड वी कैन जी प्रोवाइड देम अ टेम्पलेट and this is complimentary. That template will help them to maintain their record and the HST, how to maintain that. यदि जी देखिए कि पॉल साहब यदि आप मंथली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं आई बिलीव इन माय ओपिनियन इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर. Look at go through all your credit card statements, go through your जी business account statement, and maintain a list of all the expense you are incurring for the furthering of the business activity. आपका जो रियल एस्टेट प्रोफेशन है उससे जी रिलेटेड जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उनकी पूरी लिस्टिंग तैयार कीजिए एंड मेक श्योर यू आर व्हेन यू आर मेकिंग द लिस्टिंग you जी try to classify those expense as per broader expense categories because कि जब भी आपको रिटर्न फाइल करनी होती है तो जी एक्सपेंस को वी हैव टू क्लासिफाई एज पर देयर नेचर. what kind of expense? Well, this is automobile expense. Again, in automobile, this is car gas है, car की repair है, toll tax है, जी your office supplies, your internet, your telephone, your meals, your advertisement, your जी brokerage charge and all. So there are different categories. So we can provide that kind of template. And when you are classifying and maintaining a list of all expense, make जी sure कि आप जो HST पे कर रहे हैं अपने expense पर उसको भी classify करें. Supposing I buy gas for say $100 and paying जी $13 HST, so total gas is 113. So हाँ जी when I classify or make my list, I put gross amount 113, gas expense $100, and HST $13. So what this list is helping your accountant or tax preparer at the end of the year, they will review the entire list, will make sure that your
expenses are broken down in different categories, and wherever they want to tweak, they can check and tweak, and they know how much input tax, GST input has to be claimed. Because जो GST और HST हम अपने expense पर पे कर रहे हैं, उस HST को we can offset again the HST we have been collecting on our commission. So यदि आपने proper working नहीं की है, maybe you lose some HST input. Similarly, बहुत बार क्या होता है कि Paul साहब, I have seen in my practice, and most of your listeners they know, if they are real estate agent or if they are an accountant, कि बहुत बार वो केवल अपने ब्रोकर T4A लेकर आ जाते हैं. I advise all our real estate agents कि make sure your broker issue a complete listing of the T4A. That list will this piece of paper will list all the sales you have made during the year, the gross commission your brokers split, all the charge a broker have put in, how much GST or HST is paid. And T4A, I have seen also T4A होती है, different broker firm are issuing T4A differently. Just give an example. Brokers में जो T4A का अमाउंट लिखा होता है, this is gross commission plus HST. Sometimes this is just net commission. Sometimes this is net commission plus HST. Sometimes this is gross commission नहीं करता रहता. Exactly. Sometimes, so without having the detailed receipt or the detailed list, it's very hard for us to figure it out कि आपका जो commission T4A में लिखा हुआ है, this is gross, net, this is gross plus HST, net plus HST, this is net expense. So जब तक वो डिटेल लिस्टिंग नहीं होगी, आपकी इनकम और एक्सपेंस रिपोर्टिंग करेक्ट नहीं होगी और नहीं आपकी HST करेक्ट होगी. So making this list will take at least 15 to 20 minutes a month, and just putting few hours in a year, you are well prepared. और जहां तक जैसा पीछे हमने बताया था जो रिकॉर्ड की बात है, मेक श्योर यू कीप ऑल द रिसीप्ट एंड एवरीथिंग. समटाइम पॉल्स क्या होता है, क्लाइंट कम्स, नॉट ओनली रियल्टर, ऑल द क्लाइंट्स, they say why do I need to keep receipts, I have my credit card statements, I invest, I use my credit card for making all the payments, and they keep on arguing. मैं आपके लिस्टनर्स को बताना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इज द प्रूफ ऑफ पेमेंट, दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ एक्सपेंस. Just give an example. You go to Walmart, you can buy your clothes, you can buy your grocery, you can buy your milk, you can buy gas if it's a Very super right. store. It could be your personal expense, your office supplies. How do just looking at the Walmart $100, CRA auditor can figure it out? It was a business expense. Similarly, Shell. Yes, we understand if I am buying something from Shell, it could be gas, but no, Shell sells hundreds of other items. So as per CRA guidelines, the credit card statement is just a proof of payment, not a proof of expense or valid business expense. And that makes all the sense. It is, I think, very logical. उसमें तो एक लाइन में लिखा होता है कि क्या खर्चा किया, और then there is no explanation. इसका एक और मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ. Besides the CRA, sometimes client comes to us and they provide, here is my 12-month monthly bank statement or monthly credit card statement. Can your staff just make out a list of all the expense? We say, okay, no problem, we can help you, we'll do it. But now I give an example, say Costco. How the hell my staff knows कि Costco में जो आपका 100, 200, 50 रुपए एक्सपेंस है, दिस इज बिजनेस एक्सपेंस, वी डोंट नो विदाउट रिसीट. या आपकी ग्रोसरी है, या आपकी गैस है, या आपका ऑफिस सप्लाईज है, या आपने टेलीफोन का प्लान बाई किया है, आपने क्लोथिंग बाई की है. Very, I think straight forward. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. उससे nobody can tell कि ये खर्चा हुआ तो कहाँ हुआ. कहीं आपने घर में लेके लिपस्टिक तो नहीं लिया, उसको बिजनेस खर्च में डाल दी. तो जब ऐसा होता है, बहुत बार होता है. हम बहुत घड़ी बार भी क्या ली है तो उसको बिजनेस एक्सपेंस में डाल दिया. जैसा हम छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा आते हैं. डेफिनेटली जी. Are you looking for a reliable legal office? Hello, mic testing 1 2 3. Hello, mic testing 1 2 3. If yes, please get in Hello, touch mic with testing 1 Ramesh Joshi 2 3. at 416-213-8600. Hello, going on, brother? The office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, Hello. notarization, and Hello, affidavit. testing 1 2. Trust. Give them a call today. Hello. 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877.
They are located at 219 Paul Cheema. 220 at 7956 Torban Road. It's right Just near do the one. intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Paul Cheema Cosmos है. Financial Center. They are located at Unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647 448 6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Paul Ravita Cheema है. today at 416 807 7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647 333 2273 or 647 328 3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905 361 0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647 333 2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647 333 2273. 24 ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਆਫ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ CPA ਫਰਮ ਹੈ ਜੀ, 30 ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CRA ਬੌਦਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਟੇਕਸ deep dive into your numbers and make sure nothing is submitted wrong. So आओ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। चलिए जय साहब। पॉल साहब, हमने टैक्स के बारे में तो थोड़ी बहुत बात कर ली है, लेकिन क्योंकि आपका जो मेन पैशन है रियल एस्टेट एंड मोर्गेज है, सो व्हाई डोंट वी टॉक लिटिल बिट अबाउट रियल एस्टेट एंड द न्यू सम चेंजेस। अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने फॉल अपना समिट भी हुई है, फॉल इकोनॉमिक प्लान भी उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। दे आर प्रपोजिंग सर्टेन चेंजेस that can affect the real estate owners hugely. So well, if you allow me, I just want to share some broader sir, things. well, this show is about real estate, mortgages, and some tips from professional like you. So well, पहली बात तो आप हमेशा इस चीज को डिक्लेयर करते ही हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज। इट कैन नॉट बी टेकन एज ए प्रोफेशनल एडवाइस और बिफोर एनी लिसनर act on,
please check with your accountant, your professionals, or you Absolutely. can call me back, because की जो discussion है, this is just for the sharing the knowledge. Don't take it as a professional advice that may not hold good in your particular situation. तो बिल्कुल पॉल सही साहब, बात है। रियल एस्टेट के बारे में हम सभी को पता है, जी, इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, रियल एस्टेट प्राइसेज आर डिक्लाइनिंग, बट लेकिन फनी थिंग मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि आज से 4-5 महीने पहले व्हेन रियल एस्टेट वाज जंपिंग लाइक एनीथिंग, हुँ, सो जनरली जो लो इनकम अर्नर्स थे या न्यू इमिग्रेंट्स थे या जिनको 1-2-3 साल हो चुके थे, बट दे वर नॉट इन ए वेरी गुड फाइनेंशियल सिचुएशन, तो जी, उन लोगों को प्रॉपर्टी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जी, because the property prices were rising day night, and multiple biddings are coming, so they were very much depressed कि यार हम लोग कभी प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. So हुँ, when property prices were started declining, उनमें एक बड़ी optimism हुआ कि चलिए हो सकता है now we can afford the property, ultimately we will have our own home in this land. जी, लेकिन as of today they are still in the same boat. Reason being कि प्रॉपर्टी के प्राइस यदि डिक्लाइन स्टार्ट हुए तो मॉर्गेज रेट started climbing up. जी, So even एब्सोल्यूटली, now, if you look at their viewpoint, they are even worse situation. क्योंकि पहले वेरी वर्स्ट उनकी जिस सिचुएशन इनकम जी, में जितनी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते थे वो, आज उसी इनकम में उतने लेवल की प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर, बिकॉज द राइजिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स आर not helping them to buy any property even though prices are declining, because this is skewing their mortgage affordability. जी, So I am really very sorry for these my new immigrant friends or those who are in the process of buying the houses. Well, the increase in interest rates are not helping them to buy their dream home. So अभी look at the although screen sir, you will government is see trying that to control. one का जो इंटरेस्ट था वो 1 पॉइंट समथिंग हुआ करता था, जी आज वो बढ़ के 5.69 पे चला गया। सर, देखिए ना, प्राइम सेकंड प्राइम एज ऑफ टुडे प्राइम इज 5.95%, and we are expecting one more, at least half 50 bips in December. 25 this time. Bank of Canada has very clearly indicated they are slowing down the rate increase cycle. But yes, things can be different when they analyze the data, they see the inflation numbers. So the core inflation is something that is bothering them. It's not coming down. And expectations of high inflation rate is there out there in the market, which they want to kill and try to Yeah, bring it down to at least say 5% this year if they can, but doesn't look like. true. Well, अभी वैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द रियल एस्टेट मार्केट, एंड Hmm, जस्ट वांट टू शेयर विद योर लिसनर्स कि इसीलिए hmm, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 1 2023 hmm, there is a complete restriction for foreigners to buying a property in Canada. So that means कि कनाडा में अभी तक जितने भी फॉरेनर्स थे, नॉन रेजिडेंट कैनेडियन से, दे वर अलाउड टू बाय द प्रॉपर्टी. hmm, Starting from January 1st 2023, it's a complete restriction. So hopefully that will help new immigrants and low income earners to buy the property. That may decrease the property prices. Hopefully, if hmm, inflation is under control, interest hmm, rate increase is slowed down, it is controlled. Well, hmm, maybe the new immigrant का जो सपना है ड्रीम होम बाई करने का, that will be fulfilled soon. सेकंड, अभी एक नया चेंजेज हुआ है पॉल साहब, मे बी आपके लिस्टर को पता नहीं होगा. अर्लियर hmm. गवर्नमेंट मेड ए चेंज कि एनीवन बाइंग ए हाउस, and if they sell this house before 12 months from the date of closing, or say हाँ before जी, हाँ 1 जी। year, then they won't be get principal gain exemption being a principal residence. Now, That's simple for them, right? sorry sir, आपकी आवाज थोड़ी कट गई. That will be a business income for them. Sorry, not clear. वो business income के तौर पे यूज की जाएगी। Exactly, yes. एंड अभी गवर्नमेंट में एक चेंज और किया है कि नाउ दे आर अप्लाइंग दिस ऑन द असाइनमेंट सेल. तो यदि किसी, सपोज कि किसी एक इन्वेस्टर ने एक कॉन्डोमिनियम बुक कराया हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड दिस कॉन्डो और दिस हाउस इज सोल्ड ऑन असाइनमेंट, एंड नाउ द गाय हु इज बाइंग इट ऑन असाइनमेंट, इफ दे आर सेलिंग इट बिफोर 12 months from the date of closing, then this sale will again be treated as a business sale. This will not result as a capital gain. So capital gain में आपको पता ही है पॉल साहब, 50% is exempt and 50% taxable. So capital gain, if you look at,
even if someone is paying highest marginal rate, the effective tax is somewhere close to 25%. So capital gain exemption nahi hogi. This will again be treated as a business gain. So these are two changes. And one more जो अच्छा assignment पर HST and all, I believe that is old things. Most of the listeners must be knowing that assignment was subject to HST. Then government made some changes, made it more stricter. So nowadays, most of the time, assignment sales can lead to HST, and it could be treated as a capital gain, business gain, capital gain, depending on situation. So एक गवर्नमेंट ने चेंज और किया है, that is happening in Ontario only. As we all know कि foreign buyers were paying 15% non-resident housing tax in GTA. That was increased 20%, and now effective October 22nd, I believe, October 25th. Effective October 25th, 2020, this foreign buyer tax in Ontario, not only GTA, the entire Ontario increased to 25%. That means now government is trying to control rising prices of property and want to make it affordable to the local Canadians and discouraging all the foreign buyers. Earlier, this foreign tax was imposed in only GTA, but now it's entire Ontario. And instead of 20%, this is now 25%. हाँ जी, उसको कुछ चेंजेस हुए हैं और they are going to hit the market in a very different light. So Exactly. I'm sorry for my audio this today. I don't know what's going on. Something is not working right for me today. So Paul I साहब, will, एक गवर्नमेंट ने भी प्रपोज और किया है, एक मेजर चेंज और भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है. दिस इज नॉट येट जी enacted, but this is recently proposed by government in their fall हाँ जी summit, fall economic summit, and this change is known as UST, uh, UST underused housing tax. So this what does it UST means कि किसी भी इन्वेस्टर का, वेल देयर आर सर्टेन जी एक्सक्लूसिव क्लॉज एज वेल. यदि किसी भी इन्वेस्टर ने कोई हाउस बाय किया हुआ है, मेनली दोज हु आर नॉन रेजिडेंट, सॉरी हाँ जी नॉन रेजिडेंट, और जो कि जी पीआर नहीं है, सिटीजन नहीं है, और दिस हाउस इज अंडर यूटिलाइज्ड, वो पूरे साल वेकेंट रहा है या इट्स नॉट प्रॉपरली रेंटेड आउट, देन दिस कुड बी 1% टैक्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. So this is known as underused housing tax. This will अच्छा be जी imposed. Yeah. So this is a new change, and the government has proposed it, and soon it will pass and become an act. So anyone who is mainly not a PR or a जी citizen, tax will charge on that. The foreign, because there are lot of foreign buyers, non-resident, who own the property here. So that means this tax will charge from them. And एक बड़ा चेंज और हुआ है, वन मोर चेंज. जी जितने भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी ओनर्स होंगे गोइंग फॉरवर्ड, दे नीड टू फाइल ए प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन. अच्छा यस, एंड दिस डिक्लेरेशन फॉर 2020, दिस डिक्लेरेशन विल फाइल बाय अप्रैल 30th. तो अभी जब टैक्स फाइल करेंगे तो ये भी यस डिक्लेयर करना पड़ेगा. यस, तो इसमें कुछ एक्सक्लूजन क्लॉज भी है कि कौन कौन जो प्रॉपर्टी ओनर्स है वो एक्सक्लूड होंगे. बट अगेन, वेल देन इट बिकम ए वेरी डिटेल्ड डिस्कशन. गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड, and recently, I may be wrong, but I read it yesterday night only. This change was effective. The government proposed this change to be taking place effective December 31st, 2022, and all अच्छा the property owners, they were supposed to file the return by April 30th, 2023, but now it is delayed by 1 year. So again, my जी information may not be correct of this postponing, but that's what I read yesterday only. यदि ऐसा हो गया तो इसमें क्या है, नॉन फाइलिंग और डिक्लेरेशन विल कॉस्ट $5,000 पेनल्टी. wow that was a very high penalty Jain साहब. यस, वन मोर चेंज अगेन कमिंग अप, दिस इज प्रपोज्ड. पॉल जी साहब ने देखा होगा पर क्या होता है कि एक बेनिफिशियल ओनर होता है प्रॉपर्टी का, एक लीगल ओनर होता है, और उनमें एक बेयर ट्रस्ट हम बना लेते हैं, जैसे कि कहते हैं यार माय कॉर्पोरेशन इज लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और हाँ जी बेनिफिशियल ओनर, और मेरे कॉर्पोरेशन को मोर्गेज नहीं मिली, इसलिए आई एम द लीगल टाइटल पे मेरा नाम है, बट एक्चुअल जो ओनर है, बेनिफिशियल ओनर, वो जी कॉर्पोरेशन जी है. जी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस वर हैपनिंग हियर. दीज आर वेरी वेल accepted by CRA. This is under a trust. The trust name was Bear Trust. हाँ जी It was just a 1 or 2 pager trust agreement that was prepared by a lawyer saying, well, who is the beneficial owner, whereas who is the legal owner. तो उसमें जो okay so CR beneficial is owner going to होता है, differentiate that no, number. no,
These kind of bare trust were not subject to filing any returns. Now Okay. all these bare trusts are subject to filing a return. Oh, I see. एक So डिक्लेरेशन होगा, रिटर्न होगा, जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअल ओनर कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, कितनी इनकम आई। वेल ऑब्वियसली दिस विल हैव लिटिल मोर इंफॉर्मेशन, सो दिस टाइटल पे विल तो बी मैं गया, टाइटल पे मैं हूँ, पर बेनिफिशियरी मिस्टर जैन। तो मिस्टर यस जैन कहीं बाहर रहते हैं, इंडिया में या कहीं रहते हैं, ठीक है। तो मैंने सो कहा कि मैंने बाय की प्रॉपर्टी, पर ये एग्जैक्टली जैन साहब बेनिफिशियरी हैं। तो अब मुझे और जैन साहब को आपस में भी कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा शो करने के लिए? पॉल साहब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हाउ डू वी प्रूव इट कि जी, एक्चुअल हाउ डू यू ओनर प्रूव इट? बिकॉज ऑफ लीगल सिचुएशन यू आर ऑन द टाइटल, जी, हाउ गोना प्रूव इट? उसके लिए जो एक एग्रीमेंट होता है, दिस इज ट्रस्ट एग्रीमेंट, एंड दिस ट्रस्ट एग्रीमेंट इज नोन एज बेयर ट्रस्ट एग्रीमेंट। बियर ट्रस्ट एग्रीमेंट, BEAR ट्रस्ट एग्रीमेंट। और ये दो अच्छा, तीन पेज का छोटा सा एग्रीमेंट होता है, कोई भी लॉयर को बना देता है। वो एंड यहाँ पे तो सभी के वैसे ही एग्रीमेंट किए हुए ना, वो BEER वाले किए हुए हैं। तो BARE बेयर ट्रस्ट है ये। ये BEAR वाला। सो जस्ट डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, जैसे बी बियर, जैसे बियर होता है वैसा एग्रीमेंट, यस बियर यस बियर ट्रस्ट एग्रीमेंट सो between नाउ beneficiary यस and the person who is actually showing up on title. यस सो इन ट्रस्ट की भी एक रिटर्न फाइलिंग करनी कंपलसरी गोइंग फॉरवर्ड, सो दैट सीआरए जी, नोज द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एंड हाँ जी। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस, बट दैट्स नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन। जस्ट Someday गिविंग we can talk about that. Sir, ये beer trust agreement आपने टच किया है, this is very interesting. तो इसमें बेनिफिट तो इतना ही है कि जो बंदा बाहर बैठा है, पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको नॉन रेजिडेंट स्पेकुलेशन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर कभी पे करना पड़ा तो यार लोकल जो बेनिफिशियरी है उसने ले लिया, और जब वो फ्यूचर में उसको ट्रांसफर करेगा तो उसके ऊपर वो कैपिटल गेन्स नहीं ले सकता, कुछ ऐसा होगा? I differ here. यदि if अच्छा, suppose a non-resident is a beneficial owner, that means he's the real owner. The local resident Canadian holding property interest for someone. I doubt, though I haven't deal with this, but I doubt कि उस केस में foreign tax नहीं लगेगा. I believe लगना चाहिए, provided at the time closing, our closing lawyer knows the trust existence of the trust. यदि closing lawyer को trust की existence पता नहीं है, then उसकी आई जी, में DPA नहीं पता है, because DPA name sits on the title. yeah, this is something new, something that I never heard of before, but thanks to you that you brought it up. तो इससे थोड़ा So, दिमाग में वो दीवा जाग गया है कि ये भी अच्छी जानकारी है कि ट्रस्ट में क्यों कोई लेगा अगर उसने टैक्सी फाइल करना है, लेकिन आप छोटा NRST करना है, तो फिर फायदा आई नहीं। गिव मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ पॉल साहब। जी, वेल one of new client came to me 6 months or 8 month back. Mr. Jain, I am buying a condominium and I जी, bought this condominium 2 years back. But now I don't want to buy this in my individual name. Instead, I want to buy it in my corporation's name. I had created a corporation and now my builder is not allowing me to transfer this. The purchase and sales agreement doesn't allow any assignment sales. So my builder is very restrictive. He doesn't allow to transfer. What is the solution? I suggested him, why don't you sign up a bear trust? And I referred him to a lawyer. And tax lawyer vetted my suggestion. He said, yeah, you can create a bear trust. In that case, the trust will say the legal owner of the property is your corporation, whereas because of certain issues, you are holding the title in your name. In okay, that case, all the income and gain will be taxed in the hands of the corporation. And the okay, lawyer prepared a major bear trust agreement. So there could be certain situations. There could be, supposing I am a new immigrant, I can't buy a property because my income is low or certain other issues. But जी, my brother, sister, my parents, they live here. They want to support me. So, or I don't have I have down payment, but I can't prove my income to support the mortgage. this Then is my brother very help. interesting, Jain Saab. I think when I am in your office next time, or when you give me time again, we can expand on it. It's pros and cons for people, for beneficiary, and for those who are holding the trust. We can Practical. expand more on it. This is very good information. Thank you very much for talking about that. क्योंकि कन्वेंशनल चीज तो जैन साहब सभी को पता है,
कि सेल होती है, परचेज होती है, एनआरएसटी होता है, एवरीबॉडी। वो 8 साल के बच्चे को पूछ लो, उसको पता है कि ये बायर का एजेंट होगा, सेलर का एजेंट होगा। तो व्हाट इज डिफरेंट? सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज समथिंग पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड नाउ हाउ इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। इट इज टोटली ब्रांड न्यू सब्जेक्ट। मेरा ख्याल इसके ऊपर कभी आप मुझे वक्त दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। लंच मेरे This ऊपर। is professional. You know, few of the changes these are just proposed last week only by the government. As a ओके, professional, I believe not me, all professionals they keep themselves updated. What's new in the market? What new in the government? What will affect your life after 6 months down the road? जी जी। तो So जैन they साहब, prepare their टैक्सेशन की बात के करें अगर, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बिकते हैं जब टैक्स सीजन आता है। लोगों को लगता है कि भाई ये $20 का, $15 का सॉफ्टवेयर ले लो और डाटा चढ़ा दो और हो गया काम खत्म। क्या करना है, T4 ही इनपुट करनी है, हो गया काम। पर मुझे जितना समझ आता है कि देयर आर मोर थिंग्स other than T4 that you should be aware of when you're filing your tax return। तो हर एक चीज, जैसे हम टैटू अपना आप नहीं ना बना सकते, हमें जाना पड़ता है प्रोफेशनल के पास। ये तो आप तो वो फ्लावर का भी कुछ और ही बना दोगे। तो एक्सपर्ट्स दे ऑलवेज मीन समथिंग, उन्होंने एजुकेशन ली है, उनके पास जैसे भी जैन साहब ने कहा अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट विच इज वेरी क्रिटिकल। तो टैक्स के ऊपर पैसे मैं कहूंगा कि खर्च मत करें, किसी अकाउंटेंट के पास जाके टैक्स फाइल करा लें, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट के साथ। मैं अपनी एग्जांपल शेयर करूंगा सर, कि जब मैं पहले टैक्स फाइल करता था आपके पास आने से पहले, तो एक जब मुझे सीआरए का नोटिस आया कि हमारी रीअसेसमेंट हो गई जी 2-3 साल बाद, और इतना बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर लोड डाल दिया कि पे किश्तों में किया 1 साल पूरा लगा के, क्योंकि बैंकों में पैसे तो होते नहीं है, जितने आए खा गए। और सारा सिर के ऊपर लोड पड़ा, वो कलेक्शन पे चला जाता है, कलेक्शन के पास जाके आप मीटिंग करते हो और उनसे एग्री करते हो कि मैं मंथली इतने पैसे आपको पे कर दूंगा, क्योंकि 18, 20, 25 हजार निकालना एकदम इजी नहीं होता। agreed. तो पता लगा कि ये हुआ कहाँ पे था, तो पता चला कि भाई साहब उन्होंने जो 80 हजार लिखना था इनकम का, मेरी मैडम का, वो उन्होंने 8 हजार लिखकर भेज दिया, एक जीरो मिस कर दी। और अब उनका तो कहना ठीक था, ये साइन हमने किए हैं। तो मैंने कहा भैया हाथ जोड़ता हूँ, ये हमारी लास्ट मीटिंग है, तो मैं तो आने से रहा। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, और द वे यू गो थ्रू दोज नंबर्स, निटी ग्रिटी, यू, इट्स लाइक कारपेंटर जैसा काम है, मेजर ट्वाइस कट वंस। तो आप उसको बार 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 ब्रेनस्टॉर्म करते हो, एनालाइज करते हो, फिर उसके ऊपर रिटर्न फाइल करते हो, विच आई लाइक अबाउट यू। और मुझे आपका Thank you. प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड बुरा नहीं लगता, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। Thank you. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक दोस $15 सॉफ्टवेयर, डज इट मेक सेंस टू गो देयर? Paul sir, I have two different opinions. First one, if any taxpayer thinks yes, their taxes are very simple, they have one T4, two T4, doing themselves by buying a software is not wrong. They can do it. It's very simple, no doubt. अच्छा, But yeah, but at the same time, what happened? They are simply filing their taxes and कंप्लाइंस कर रहे हैं सीआरए की, टैक्स फाइल करना है, रिफंड आता है 100, 200, 500 का, बड़ी अच्छी बात है, वो तो चाहिए चाहिए, नहीं आता है, इफ यू ओ नो वन कैन सेव इट, बट दे आर what they are losing a professional advice. If they think जी if they go to a professional paying $100, $150 is not worth, then it's their choice, yes they can do it. But जी a professional, जैसे छोटी सी बात बताइए, मुझे खांसी जुकाम हो गया, मे बी आई नो hundreds of over the counter medicines, I can take them, जी, sometime I'm perfectly fine, sometime home remedies हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि हम टोटली सोचे एग्री। नहीं यार मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, ठीक है, यहाँ कनाडा में गॉड विलिंग हमें एवरीथिंग इज कवर्ड, वी डोंट नीड जी, टू पे एनी मनी, लेकिन यदि हम बैक होम की बात करें, स्टिल वी गो टू अ डॉक्टर, स्टिल हम गो टू डॉक्टर डॉक्टर, क्योंकि प्रोफेशनल मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई तो वांट सेम थिंक कि और ये आप फिर मैं बिजनेस तो अपने राइट ऑफ कर लेते हैं। will give you this और and that value. Sometimes think, oh, because you want new clients, you want to report the client, that's why you want. It's client to make the judgment. absolutely, well I totally agree with you what you're saying,
Definitely, you my go to anywhere, you buy any services, you have to pay for that. You want to buy the groceries, you buy grocery to a small shop, or you go to Loblaws, big shop. Yes, you are paying higher amount, but you are ambience, the quality, the atmosphere. Similarly, you go to a professional charging $50, someone charging $150. The difference, you have to look at the difference. And yeah, if professionally charging something, the value, the fees, it's up to you to take the value out of the professionals. Always बिल्कुल don't सही बात. expect professional to value there. It's up to you to get the value out of this. I totally agree with that. और कि I'm strong proponent of speaking with professionals and professionals alone. मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई बंदा ऐसा काम कर ले कि बाद में उसको पछताना पड़े. To get a hold of Mr. Jain, call his office 905-790-9327. So, and take complimentary advice from him, and then see if there's a marriage of minds. Because for me, it's a great and long-lasting marriage of minds, and I totally believe yours will be too. ठीक है जैन साहब. आपने लास्ट कमेंट पॉल साहब, आपने मैरिज ऑफ माइंड कहा, तो जो जी हमारा प्रिंसिपल वाला है वो मैरिज ऑफ माइंड ही है. जो मैरिज में भी कभी कभी झगड़े होते हैं. जी जी. पर relationship नहीं होता है. जैन साहब, झगड़े की तो कोई दिक्कत ही नहीं है. झगड़ा नहीं होगा तो मजा नहीं आता. सो झगड़ा तो बहुत जरूरी है लाइफ में. That is a spice to your relationship. So I totally go for it. मैं तो लूंगा इसको कि हाँ भाई झगड़ा ही ठीक है. जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आते रहें और हमें एजुकेट करते रहें. और नेक्स्ट टाइम अगर कभी वक्त लगे तो आप भी स्टडी कर लीजिए इसको, वेयर ट्रस्ट के ऊपर, प्रोज कौन. मैं भी कुछ इसको सोच पढ़ूंगा कि क्या इसके ऊपर है. समडे विल टॉक अबाउट इट. डेफिनेटली पॉल साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. और मेरे व्यूज आपने मुझे मौका दिया शेयर करूं मैं आपके ऑडियंस के साथ. एंड आई जी डू होप आपके ऑडियंस को कुछ शायद वैल्यू मिली होगी. एटलीस्ट जो मैंने कुछ नई चीजें बताई हैं, 2000 बियॉन्ड द रूटीन व्हाट वी डिस्कस अबाउट द टैक्स एंड एब्सोल्युटली. आई लीव ऑल योर लिसनर विद थॉट कि प्लीज जो मैंने कहा है इसको देखें, सुने, पढ़ें, गूगल करें, अपने अकाउंटेंट से बात करें. यू विल हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन. जी, जैन साहब बुक कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं, कारपोरेशन रजिस्टर करवानी है उसके ऊपर आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं, वो करते हैं रजिस्टर बुक आपकी. देयर आर 1000 थिंग. बिजनेस खोल रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी बहुत ज्यादा असिस्टेंस कर सकते हैं आपको. सो ऑलवेज गो टू हिम एंड गेट एडवाइस. जैसे मैंने उनका नंबर शेयर किया आपके साथ, 905-790-9327. So you can always reach out to him and he will respond to you immediately. अगर कॉल मिस हो जाए, do not forget to leave a voice message. He will get back to you very soon. I can tell you that. So जाने से पहले I would like to support a few words of consolation, give few words of consolation to those people who have lost their beloved ones. We send our deepest and heartfelt condolences. Life is all about living and dying. So death is an eternal truth. Nobody can change it. So, but loss of a beloved one is a very severe shock in life. No doubt. May God grant peace to the departed soul and give you strength to overcome this loss. Thank you very much. I will see you tomorrow, Tuesday, 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Stay tuned for more coming up on this channel, and we try to bring as many great people, professionals, to help you guide through the various intricacies of financial world, real estate, and mortgage worlds. Thank you very much for being here. Bye for now.